बीते दिनों जहां पूरा देश गणेश चतुर्थी के फंक्शंस में बिजी था, वहीं सुप्रीम कोर्ट में दो ऐसे इंस्टांसेस हुए जिसने न्याय की दुनिया को हिलाकर रख दिया। पहला तो एक ऐसा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने खुद लिया, जब उनके सामने पुणे के एक ढोल ताशा ग्रुप ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि NGT के ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसने की गणपति विसर्जन के वक्त ढोल ताशा ग्रुप को केवल 30 लोगों के साथ सीमित रहने के लिए कहा था। NGT के इस ऑर्डर पर स्टे लगाने के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को कहते हुए सुना गया कि इन लोगों को ढोल ताशे बजाने दीजिए, ये पुणे की जान है। एक महाराष्ट्रियन होने के नाते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूजा के महत्व को अच्छे से समझते होंगे, लेकिन उसी दौरान इस पूजा से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी ऐसी उठी है जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सवालों के घेरे में खड़े हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम उस एक पूजा की बात कर रहे हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने घर पर ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी शामिल होते हुए देखा गया है। अब इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पूजा में शामिल होने के बहाने अपना कोई काम निकलवाना चाहती है। आइए बिना देरी करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप तो जानते ही हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के घर पर हुई पूजा में शामिल होने के बाद कई सारी कंट्रोवर्सीज उठ रही हैं। इस कंट्रोवर्सी के चलते सबसे ज्यादा उंगलियां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ पर ही उठी हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस तरह एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का मिलना सही नहीं है। पहले जहां ये इल्जाम सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने लगाए हैं, वहीं अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी इस लाइन में आगे दिखे हैं। और तो और इसी दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 9 बेंच जजमेंट के एक हिस्टोरिक फैसले पर अपनी रिव्यू पिटीशन भी फाइल की है। ये वही फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा था दैट स्टेट कैन आल्सो कलेक्ट रॉयल्टीज फ्रॉम माइनिंग ऑफ मिनरल्स एक्सकेवेटेड विद इन देयर बाउंड्रीज, और ये सिर्फ सेंटर की जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि आपको बता दो कि इस रिव्यू पिटीशन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ खुद शॉक थे कि कैसे 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर एक रिव्यू पिटीशन फाइल हो सकती है। हालांकि आपको बता दो कि इस रिव्यू पिटीशन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ खुद शॉक थे कि भला कैसे एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट पर रिव्यू पिटीशन फाइल हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स के कंधों पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, और जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ पूजा में शामिल हुए थे। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये कह पाना काफी मुश्किल है। पर एक बात तो तय है कि उनके ऐसा करने से जुडिशरी के कुछ नामी चेहरे काफी ज्यादा परेशान दिखे हैं। यहाँ तक कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस इंसिडेंट को काफी अनफॉर्चुनेट बताया है। अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी और ना कि SCPA प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में ये कहा है, I have great respect for the present Chief Justice. I can say without any hesitation that he is a man of great personal integrity. But I was really surprised when I saw this clip that was going viral. And I have some issues on principle. Issue number 1, no public functionary, whoever it may be, especially those who hold the highest office in the country, whether it's the President of India, the Prime Minister of India, the Chief Justice of India, whoever, should not publicize a private event. I'm sure that maybe the Chief Justice may not have known that this was being publicized. That's sad. The second thing is, the Prime Minister of India should never have shown his interest to go to such a private event. Because the Prime Minister and those he must have consulted should and must have told him that this may send a wrong signal. Because the issue is not individual, the issue is what impact such a clip has on the minds of people. And if there is gossip around it, then it is not fair on the institution. You should not lend yourself to a situation, to be in a situation where people can gossip about the institution
and start speculating. Number 3, my religion and my way of expressing myself in the context of my beliefs is a private matter. It's not a public matter. And therefore, there should be no videography, photographs, which then should be allowed to be made public. That's just not on. Especially in the context of people holding the highest positions in the country. Because what happens is that it sort of ignites a debate which is unnecessary and harmful to the institution. There may be nothing behind it. There may be no motivation behind it. But there is speculation because of this, which is not good for the institution. Lastly, the court is deciding day in and day out issues relating to executives' actions in the highest court of the country. And if this kind of viral clip is circulated, then it may have implications which are not fair to the individuals concerned. And yet institutionally they do harm. And the last point I wish to say is that once you do this, what message does it send to those in the high courts in India and to the judiciary functioning at various levels in the country? They also look upon these things. And therefore that sends a signal which is also unfortunate. So my view is that it should best have been avoided. At the same time, I request the media individuals there not to blow it out of proportion, not to start speculating personal motives. And I request the Prime Minister of India not to make a spectacle of these events. Because there have been Maharashtrian Chief Justices in the past. It's not the first time that there's a Chief Justice from Maharashtra. And in the context that there is going to be an election in Maharashtra, this is not an opportune time for the Prime Minister to have made a public spectacle of a private ceremony. Thank you. इसी के साथ ही अब द कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने भी इस कंट्रोवर्शियल इवेंट पर अपना टेक रखा है और कहा है कि ऐसे इंसिडेंट्स जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को हार्म करते हैं और जो कि हमारे देश को न्याय देने वाली संस्था के लिए सही नहीं है। और उन्होंने कहा है कि मामला और ज्यादा तब संगीन हो जाता है जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के नेता जुडिशरी के इम्पोर्टेंट लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, जब गवर्नमेंट वन ऑफ द पार्टी है इन द कोर्ट केसेस। अब जितने लोग एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से गुस्सा है, वहीं दूसरी और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की फेवर में कहा है और बोला है कि ऐसा नहीं है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स को आपस में एक दूसरे के साथ खपा रहना चाहिए। लेकिन इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें प्लीज बताइए। एंड कीप सपोर्टिंग एंड फॉलोइंग लॉ चक्रा।